Okay, can you hear me? मेरी आवाज आ रही है? हाँ? हाँ सर आ रही है। Okay. और फिर तो हम लास्ट टाइम कहाँ से हम एक्चुअली हमने वो रॉब्स टेस्ट किया था, है ना? ओके, उसी से आगे करते हैं और आज काफी सारी एग्जांपल्स भी करेंगे हम इंशाल्लाह यूजिंग दोस टेस्ट जो हमने किए थे, रेशियो टेस्ट, कोशीज रूट टेस्ट एंड कंपैरिजन टेस्ट तो खैर हमने किए ही हैं. So let's continue with that. Is CR present? CR है वहाँ पे? नहीं है. Okay, let me. Yes, sir. है. Okay, तो वो अटेंडेंस का देख लेना. Okay, sir. Okay, share the whiteboard क्योंकि मैं सिर्फ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही नोट करता हूँ यहाँ पे. Okay, so let me take a color. Okay, हमने लास्ट टाइम तो so far हमने बेसिकली काफी सारे टेस्ट किए. Let's revise them. कौन कौन सा किया था? जो पॉजिटिव सीरीज टर्म्स के लिए तो किया था कोशीज रूट टेस्ट, है ना? फिर हमारे पास एक सीरीज है. नहीं, वे बट मेनी अब हमारे पास बहुत सारे टूल्स है देखने के लिए. जैसे हमें पता है. हेलो, नहीं मुझे पता नहीं यहाँ कैसे आपको अलाउ करना है टू अनम्यूट. किसी ने मुझसे पूछा था लेकिन तुम नहीं, वो अभी तो किसी ने बात की, वो तो अनम्यूट किया ना उसने. एनीवेज, सो लेट्स कंटिन्यू. अगर तुम्हें कुछ पूछना भी हो तो वैसे तुम पूछ सकते हो. अनम्यूट हो रहा है? हेलो, किसी स्टूडेंट ने Yes, अभी sir. आ रहा है ना? तुम बात कर सकते हो ना मेरे से? Yes, sir. ओके, कोई इशू नहीं. सो व्हाट आई सेड क्या था अपना, हमने काफी सारे टेस्ट किए, है ना? जैसे हमने किया कि अगर आफ्टर अ सर्टेन स्टेज यू हैव गॉट अ comparison test, so if something like this happens, so what do you have? And k is some positive number and this happens for n greater than equal to m, then we know that अगर ये सीरीज कन्वर्ज करेगी तो ये सीरीज भी कन्वर्ज करेगी, अगर ये सीरीज डाइवर्ज करेगी तो ये कन्वर्ज करेगी. Then we did many जैसे Raab's ratio test था अपना. Ratio test was this, that if you take this n plus 1 by n and this goes to some L as n approaches infinity, then if L is less than 1, the series will converge. And similarly, मतलब हम मुझे लगता है करते करते जाएंगे, एक्सरसाइजेस ये वहीं पे क्लियर हो जाएंगे. Okay, then we did Raab's test. हमने किया कि अगर हमारे पास हो कि ये लिमिट n approaches infinity जो हम लास्ट टाइम कर रहे थे, तो ये था n into an divided by a sub n plus 1 minus 1. अगर ये l है और अगर l bigger than 1 है, then this would converge. This would converge, and if l is less than 1, this would diverge. और अगर 1 है तो test fails, right? तो मैंने कहा था this is a better test than the Cauchy's and Dahlenberg's ratio test. You know Cauchy's root test क्या है? You take the nth root and if it converges to some L and if it is less than 1 then it should converge, and if it is greater than 1 then it will diverge. तो I hope तुमने ये example मैंने की थी कि जिसमें वो although हमें जैसे मैंने कहा था अगर हमारी सीरीज है ये alpha by beta plus 1 by alpha plus 1 by beta plus 1 plus alpha into 2 plus alpha divided by 1 plus beta, इस तरह की कोई सीरीज है where alpha beta are numbers, some real numbers. तो अगर इस टाइप की कोई सीरीज है तो हम देखेंगे इसके लिए रेशियो टेस्ट तो फेल होता है, लेकिन हमारा जो Raab's टेस्ट है वो हमें रिजल्ट देता है, वो हमें कंक्लूजन देता है कि whether it converges, when will it converge, when will it diverge.
तो अगर मैं रेशियो टेस्ट करूं तो पहले तो मुझे चाहिए nth टर्म, तो nth टर्म होनी चाहिए, it should be 1 plus alpha into 1 plus beta up to so on and so forth, n minus 1 plus alpha, क्योंकि पहले में अल्फा है ही नहीं, तो जब n होगा 1, right, this would be just alpha by beta. Similarly, I divided by 1 plus beta, वो मैंने गलत लिखा, it's alpha here, 2 plus alpha, 2 plus beta up to n minus 1 plus beta. So this is what we call the nth term जो इस सीरीज की होगी here. और अगर मैं an plus 1 लूं, as you can see ये ऐसे ही रहेगा up to n plus alpha, इसको ऐड होगा, और of course ये ऐसे ही रहेगा up to n plus beta, right? So अगर मैं लूं an plus 1 for ratio test, मुझे इसका लिमिट चेक करना है, so it should be simply n plus alpha divided, क्योंकि बाकी कैंसिल हो जाएगा, the terms cancel हो गई, and if limit n approaches infinity, this will become 1 and ratio test will fail. What I do now, मैं इसको लगाऊंगा Raab's test, but अगर मैं लूं ये, so limit n approaches infinity, n into an divided by an plus 1 minus 1, so this would be equal to limit n approaches infinity, n बाहर और इसका उल्टा, so it would be n plus beta divided by n plus alpha minus 1, so that would be equal to, or this equal to, n को हम अंदर ले जाएंगे, so या फिर इसको लिखते हैं, or we just simplify it, so this would be limit n approaches infinity, n into n plus beta minus n minus alpha divided by n plus alpha. So next page पे मैं दिखा सकता हूँ, okay, I need eraser. Okay, so मुझे जो मिलेगा limit n approaches infinity, n times an divided by an plus 1 minus 1 is equal to limit n approaches infinity, n times, I would have, what do I have? It is beta minus alpha divided by alpha plus n था नीचे, right? So that would be equal to limit n approaches infinity, n को हम नीचे ले जाएंगे, so it would be beta minus alpha divided by n minus 1 plus 1, sorry. So of course अगर मैं n को infinity करूँ, ये 0 हो जाएगा, this is just equal to beta minus alpha. और अब मुझे पता है Raab's test क्या था, अगर ये bigger than 1 है, the series converges. If it is less than 1, the series diverges. तो इसने हमें ये बता दिया. So therefore the series, ये जो हमें दी गई थी, summation an, जिसकी nth term थोड़ी लंबी छोड़ी है, it will converge if beta is bigger than alpha and diverge if beta is less than alpha. ठीक है? Now suppose, नहीं मैंने गलत लिखा, beta is bigger than alpha plus 1, है ना? Beta is less than alpha plus 1. Okay. Now the question is, now for the case, now what if beta अगर बराबर है alpha plus 1 के, तब क्या होगा? तो हमारे जो nth term है वो क्या बन जाएगी? So you will get like, तुम्हें क्या था, पहली सीरीज आएगी तुम्हारे पास, पहला क्या था टर्म, पहली टर्म थी तुम्हारी जो हम सीरीज की टर्म थी, वो क्या थी, इधर जाओ, अब देखो मान लो बीटा इज इक्वल टू 1 plus alpha, so it would be alpha divided by 1 plus alpha. In case beta is equal to 1 plus alpha, this would be plus, then I would have 1 plus alpha divided by 2 plus beta, right?
and इसी तरह से then there would be 1 plus alpha into 2 plus alpha. Now that would be नीचे आएगा हमारा of course 2 plus beta into 3 plus beta. Sorry, not alpha, alpha में convert करेंगे 3 plus alpha. इस तरह का सीरीज मिलेगी हमें. ये सब कुछ हम in terms of alpha लिख सकते हैं. चलो मैं यहाँ लिखता हूँ direct. In case beta is equal to alpha, the series becomes alpha divided by alpha plus 1 plus 1 plus alpha divided by 2 plus alpha plus 1 plus alpha divided by 3 plus alpha and so on and so forth, which is the same as summation 1 plus alpha divided by n plus alpha. Right. Kyunki cancellations bhi ho rahi hai, you can easily check. Now we know that this behaves because alpha, if alpha jo hai wo fixed hai, right? This behaves the same as summation 1 by n. Therefore, it diverges. Therefore, summation LAN would diverge in case beta is equal to alpha plus 1. So, हमें मिला. Therefore, summation n runs from 1 to infinity, would converge if beta is bigger than alpha plus 1 and diverge if beta is less than or equal to alpha plus 1. So this was an illustration to show that जो हमारा Raab's test है वो तब भी काम करता है जब रेशियो या कोशी टेस्ट हमारा फेल होता है. जैसा कि मैंने कहा इट्स स्लाइटली स्ट्रॉन्गर देन दैट, बट इन जनरल जो टेस्ट का खेल है, मतलब ये प्रैक्टिस जितना तुम करोगे उतना ही तुम्हें समझ आएगा. जितनी सीरीज को तुम चेक करोगे ना कि कहाँ कौन सा टेस्ट, इट्स लाइक जस्ट इंटीग्रेशन करते हो तो उसमें क्या होता है, उसमें रूल्स बहुत सारे हैं, लेकिन जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो तुम्हें ये अंदाजा नहीं होगा कि कहाँ कौन सा रूल लगेगा. ठीक है, इसलिए हम आज थोड़ा प्रैक्टिस ही करते हैं. तो हम देखेंगे कुछ सीरीज को चेक करें. जो मैं एक्सरसाइजेस ले रहा हूँ ये इसकी है, सी मलिक की. और भी बुक्स पे ऑलमोस्ट यही एक्सरसाइजेस में कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं है. तो अगर तुम ये सारी कर लो, मैं ज्यादातर बता ही दूंगा, लेकिन घर पे तुम भी प्रैक्टिस करो. बिकॉज अनलेस यू प्रैक्टिस योरसेल्फ तो तुम्हें इसमें मतलब तुम इतना उसमें एक्सपर्ट नहीं बनो. जैसे पहली वाली सीरीज ने दी है 1/2 प्लस 1/2 into 2 square plus 1/3 into 2 cube plus so on and so forth. So this is a series. Now here अगर मैं चाहूँ an जो होगा nth term, an should be क्या होना चाहिए 1/n plus 1, ठीक है, into n square, क्योंकि n को 1 देंगे 2 देंगे, ठीक है. Not really, it should be n, ये 2 square है 2 cube है, so it is power भी change हो रहा है, square नहीं होना चाहिए, it should be what, cube है बिल्कुल. So it is 1 raised power 1, 2 raised to power 2, 2 raised to power 3. So it is actually 2 raised to power n. Right. And अगर 1 है, कुछ गलत हो गया इसको nth term बनाने में. Nth term इसकी है because it is 2 square 2 cube, so it's like 2 raised to power 1, 2 square 2 cube. So इसको मैं लिख सकता हूँ, नीचे तो है 2 raised to power n और साथ में क्या है, पहले है multiply 1, so it is n into 2 raised to power. अब ठीक है, 1 2 3 ऊपर भी है, so it's okay. Now I think it should, मतलब यहाँ तुम्हें सीधे दिमाग में आना चाहिए it has to do something with the, लेकिन प्रैक्टिस से ही पता चलेगा, तो इसलिए हम करते हैं. So an plus 1 किसके बराबर है, क्योंकि 1/n plus 1 into 2 raised power n plus 1. So अगर मैं अब लूँ इनका रेशियो टेस्ट यहाँ बिल्कुल सही लगता है, क्योंकि ये कैंसिलेशन हो जाएगी बहुत, मतलब टर्म्स की, इसकी और इसकी 2 के पावर्स की. So it would be n into 2 raised to power n divided by n plus 1 into 2 raised to power n plus 1. And as you can see, that's 1/2 into n divided by n plus 1, right? So अगर मैं इसका लिमिट लेना चाहूँ as n approaches infinity and see what the number, whether I get some number,
So limit n approaches infinity. So that would be limit n approaches infinity. Of course, 1 by 2 is there. Then I have 1 plus 1 plus 1 by n. And as you can see, as n becomes very, very large, so this will become 0. So this is just 1 by 2, which is less than 1. So therefore, ratio test में हमें ये मिला less than 1. Therefore, by D'Alembert's ratio test, yeah, simply ratio test, the series converges. इसी तरह से अगर हम एक और एक्सरसाइज लेते हैं जैसे ये है, we got 1 by 3 cube एक और एक्सरसाइज plus 1 into 2 divided by 3 into 5 का whole cube square. Then I have plus 1 into 2 into 3 into 3 into 5 into 7 whole square plus so on and so forth. तो पहले हम इसकी nth term अगर निकालना चाहें, a n of the series should be 1 into 2 into up to n divided by, it should be पहले 3 है, so अगर n 1 आएगा तो it should be 2n plus 1, and it should be 3 into 5 into up to 2n plus 1 का whole square. Again, ratio test में चूंकि terms cancel होंगी, so that's what we should, मतलब हमें वही apply करना चाहिए. तो a n plus 1 बराबर होगा 1 into 2 into n plus 1 divided by 3 into 5 to 2n plus 1. उसके बाद आएगा next order number, that's 2n plus 3 whole square. और अगर तुम इनका ratio निकालोगे बचेगा क्या? बचेगा ये वाला, ये होगा simply n plus 1 divided by 2n plus 1 whole square. And if you take the limit, तो ratio test कहेगा कि this should be equal to 1 by 2 का square, I think. So that is equal to 1 by 4, which is less than 1, and we are done. So therefore, सर 2n plus 1 आएगा या 2n plus 3 आएगा? इधर 2n plus 1 आएगा या 2n plus 3 हाँ आएगा? 2n plus 3 आएगा, लेकिन फिर भी ये 1 by 2 लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ा, देखा, उससे फर्क नहीं पड़ा. So because this, जब हम इसको, it would be 1 plus 1 by n divided by 1 plus 3 by n. So as, so again ये 1 by 2 बन जाएगा, so 1 by 4, which is less than 1. Therefore the series converges. इसी तरह से 3 है हमारे पास, इसने किया है x divided by 1 plus x square divided by 2 plus x cube divided by 3. ये है हमारी series and it's given that x is positive. इसका मतलब a n बड़ा सिंपल है, that is x raised power n divided by n. तो जब भी ये सीरीज है, ये खुद ही ये चीख के कह रही है you should use root test, क्योंकि जब इसको 1 by n पड़ेगा ना पावर, तो ये इसका खत्म हो, we will get x. तो Cauchy's root test में क्या करते हैं, हम इसका nth रूट लेते हैं, वो होगा x divided by n raised power 1 by n. और अगर मैं लिमिट लूं, लिमिट n approaches infinity, x के साथ कुछ लिमिट का लेना देना नहीं. अब डिनोमिनेटर में this is 1, because we know that limit, ये हमने पहले ही किया था special sequences, p raised to power 1 by n approaches infinity is equal to 1 if p is positive. ये of course ये positive है, of course ये भी फिर हमने किया था इसी से, ये this is equal to 1 always, nth root of any number n. So what does this mean? This is equal to just x. अब ये खुद ही कह रहा है अगर ये less than 1 हुआ, right? If it is less than 1 तो क्या होगा? तो roots test, Cauchy's root test क्या था, ये converge करेगा, और greater than 1 है तो, so therefore by Cauchy's root test, summation an runs from 1 to infinity would converge if x is less than 1 and will diverge if x is bigger than 1. Now, what about x equal to 1?
तो वो भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि अगर x 1 है तो ये बन जाएगा if x is equal to 1 then summation a n runs from 1 to infinity would become summation 1 by n runs from 1 to infinity which diverges. So therefore मैं कह सकता हूँ summation a n runs from 1 to infinity converges if x is less than 1 and diverges if x is bigger than equal to 1. क्योंकि at x equal to 1 does diverge because it's a harmonic series. इसी तरह से हमारा चौथा हो सकता है एक एक्सरसाइज x square, ये थोड़ा इससे डिफरेंट है. I've got 2√1 plus x cube divided by 3√2 plus x raised power 4 divided by 4√3 plus so on and so forth. तो अगेन पहले मैं nth टर्म लूंगा. Here nth टर्म जो अपनी होगी वो an है. That should be x raised to power क्या होना चाहिए, n plus 1, क्योंकि ये 2 से शुरू होता है, राइट. और नीचे क्या आना चाहिए, then I have n plus 1, क्योंकि ये मैच होता है पावर ऑफ ए नंबर into root of n. I think that's what it should be. अब again ये कह रहा है कि what does it say? It says that मैंने ठीक लिखा square cube, हाँ x is given to be positive, square cube 4th power 5th power, ठीक है. So this is my nth term. So ये भी कह रहा है क्या करना चाहिए, ये बोल रहा है कि आप रूट टेस्ट अप्लाई करो क्योंकि x में रेज पावर n है, राइट. सो इसका nth रूट हम लेंगे और देखिए व्हाट विल हैपन. सो an रेज टू पावर 1 by n होगा क्या था अपना x रेज पावर n डिवाइड बाय n plus 1 into root of n whole raised power 1 by n. Now we have to take the limit, वो हम बाद में लिखेंगे. So it would be x of course in the top. सर ऊपर था n plus 1. n plus 1. n plus 1. n plus 1, you're right. So this is actually x raised power n plus 1 divided by n, and remember that x is positive, ठीक है. And then in the denominator I should have n plus 1 raised to power 1 by n, right. Then I should have साथ में क्या होना चाहिए, n raised power 1 by 2 whole raised power 1 by n. Anyway, so I have to take this limit as n approaches infinity, limit as n approaches infinity, limit as n approaches infinity. This is further equal to, let's write it down, limit n approaches infinity, it will be x, it will be 1 plus 1 by n, तो x into x raised power 1 by n, right. तो नीचे what do I have? I've got n plus 1 raised to power 1 by n. So यहाँ मुझे है, I can write it as n whole raised to power 1 by 2. इसको थोड़ा चेंज करेंगे और यहाँ पे हम इसको कैसे मैनिपुलेट करेंगे. Let's see. कैसे करेंगे. Okay, so I have got n plus 1. इशू यहाँ पर है एक्चुअली n plus 1 raised power 1 by n को कैसे हम करें. Now we know something, as n approaches infinity, because x is positive, so this would become 1, this would become square root of 1, that's again 1. The question is what would happen to n plus 1 raised to power 1 by n. अब चाहे तो हम इसको चेक कर सकते हैं अलग से. It would be 1, that's what I think. बट उसको शायद हमें अलग से प्रूव करना पड़ेगा. So I can think of this as a positive number always, but it's increasing. It's not a fixed number, है ना. यहाँ पे fixed था x, ठीक है ना. But I know that n raised power 1 by n does actually converge to 1. So how about n plus 1 raised to power 1 by n, right? So मतलब होना यही चाहिए, this converges to 1, but it needs a proof.
सो अगर मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे मानता हूँ ये भी 1 हो जाए, ये भी 1 हो जाए, ये तो पता ही ये 1 होगा. द क्वेश्चन इज दिस, सपोजिंग दैट इट्स 1, so it would become x. So again, if x is less than 1, this would converge. So इसको हम अभी करेंगे कि this would converge to 1 as n approaches infinity. Now, so if it is x, so it means that therefore by Cauchy's root test, पहले इसका ये खत्म करते हैं, root test, right, Cauchy's root test, then what should happen? Summation an, n runs from 1 to infinity, converges if x is less than 1 and diverges if x is bigger than 1. And if x is equal to 1, जो हमारी सीरीज बनेगी वो होगी summation 1 by x अगर 1 है, it should be n plus 1 into root of n. n runs from 1 to infinity, क्योंकि अगर x को मैं 1 कर दिया, right, बिल्कुल ठीक है. So which converges, है ना, because this would behave the same as n raised to power. इसको कंपेयर कर सकते हैं इसके साथ, तो तुम करोगे इसके साथ कंपेयर तो it converges. So therefore I can say this series converges if x is less than or equal to 1, diverges if x is greater than 1. अब सवाल रहा इसका, इसको हम प्रूव कैसे करें कि this would converge to 1 as n approaches infinity. तो हम क्या करेंगे, as so since this is positive and bigger than 1, so I can say n plus 1 raised to power 1 by n जो है, it can be, it is bigger than 1, so let this be n plus 1 raised to power 1 by n be equal to n plus r, because this will be bigger than n actually. होगा कि नहीं? n bigger than 1 तो है, उसमें कोई शक नहीं. So I can write it 1 plus some r n, then n plus 1 जो होगा मेरा, that will be 1 plus r n raised to power n, and I think that should make it converge to, okay. और अगर हम इसको binomial theorem से extend करें, so it will be 1 plus n times r n plus n into n minus 1 times जो भी है r n square divided by 2 whatever. So since ये positive है सारा r n, so this will be bigger than 1 plus n raised to power n. So it means that r n जो है वो होगा less than 1 cancel. So what will be that? r n would be less than 1. 1 over cancel, so r n would be less than 1. What does that mean? So दो तरीका इसका हो सकता है कि हम दिखा दें सर. हाँ सर उसको हम वैसे करेंगे n plus 1 1 by n लेंगे कोई सीरीज an, फिर इस पे log अप्लाई करेंगे, फिर वैसे करेंगे, फिर बनेगा log n plus 1 divided by n, कंपेयर करिए 1 by n से. हाँ वो भी कर सकते हैं, लेकिन यह ना n plus 1 raised to power 1 by n, तो अगर मैं इस सीरीज को लूं, नहीं हमें सीक्वेंस के बारे में, नॉट सीरीज के बारे में, we are talking about this सीक्वेंस है ये 1 by n, n plus, हाँ ऐसे कर सकते हैं, हाँ n plus 1 नहीं ऐसे कर सकते हैं, जस्ट नहीं लॉग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें सिर्फ सीक्वेंस के बारे में सोचना है यहाँ पे. So let's see, इस सीक्वेंस को अगर मैं देखूं what would happen. So that can be written as 1 by n plus 1 raised to power 1 by n. So that would be 1 by n plus 1. That would be, अगर मैं इसको रेसिप्रोकेट करता हूँ, ये तो गड़बड़ हो रही है, but this should converge to 1. सर आप वैसे ट्राई करो, कैसे? n is equal to n plus 1 power 1 by n, फिर log दोनों साइड से अप्लाई करो.
हाँ वैसे फिर बनेगा log ऑफ n + 1 डिवाइड बाय n, फिर यार तो कंपेयर उससे करेंगे वो 1/n से। नहीं नहीं, जस्ट अ मिनट, नहीं वो तो सीरीज के लिए हम कंपेयर करते हैं ना, तो मेरी बात नहीं समझ रहे। हमें सीक्वेंस है ना, हम यहाँ सीक्वेंस के बारे में, जैसे मैंने कहा ये सीक्वेंस सीक्वेंस नॉट एज सीरीज, तो हम सीरीज में वो कंपैरिजन टेस्ट लगाते हैं, राइट। सो ओके सर ठीक है। तो यहाँ पे वो थोड़ा सीरीज है, या तो मुझे दिखाना है n+1। देखो दिस इज known and this is what we want to find, and I think right, think what, अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा और तरीके से मैनिपुलेट कर सकता था। So this is bigger than 1 plus n, so 1 कैंसिल होगा, तो एक चीज तो क्लियर है कि Rn is less than 1। तो Rn अगर less than 1 है, तो I've got n+1 raised to power 1 by n is equal to 1 plus Rn. So this is less than 1, so this is less than 2, right? तो अगर ये लेस देन 2 है तो उससे क्या होगा, implies that, हाँ ऐसे हम कर सकते थे, n+1 raised to power 1 by n -1, हाँ ठीक है, अब सही है। देखो अब हमें यहाँ से मिला Rn, इससे हमें मिला जो Rn है, बिकॉज हाँ ठीक है, अब ठीक है। सो इस हमें सही किया था, सो आई गॉट Rn is less than 1। अब देखो इधर Rn किसके बराबर है, n+1 raised to power 1 by n। So I got n+1 raised to power 1 by n is equal to 1 plus Rn. That means n+1 raised to power 1 by n -1 is equal to Rn, right? And this is less than 1. So अगर ये less than 1 है, so अगर मैं लिमिट लेता हूँ, लिमिट n approaches infinity, नहीं कुछ नहीं होगा। So let me check the notes, यहाँ पे मैंने किया है शायद। Okay, so I've got n+1 is bigger than 1, so I can just take 1 plus n is bigger than 2 also for all n greater than equal to 1, क्योंकि n 1 से शुरू होता है ना, तो ये सही है, क्योंकि यहाँ 1 plus n है ना, n is a natural number, ये simply इसको 1 से बड़ा नहीं करेगा, so that means what? So अगर मैं इसका nth रूट लेता हूँ, it would be bigger than 1 by n, so 2 का nth root, that means I think I got it now. तो अगर p positive है, so this would converge to 1, so this is bigger than equal to 1 by n। ये क्या हो रहा है, so let's leave it, इसको कल करेंगे, मुझे लगता है क्योंकि हमारे पास 40 मिनट होते हैं, हम एक और एग्जाम्पल आगे करेंगे, बाकी इसको कल देखेंगे, बट आई थिंक इट्स स्ट्रेट, मतलब होना ही चाहिए, इसका लिमिट होना चाहिए। नाउ लेट्स टेक दिस वन, जो कि अच्छी एक्सरसाइज है, वो है 1 plus x square divided by 2 raised to power p plus 1 by x4 raised to power divided by 4 raised to power p, then I have x6 divided by 6 raised to power p plus 1 and so forth. Now we want to check whether it converges or diverges. Now पहली बात तो ये है कि an जो मेरा है वो होगा x raised to power 2n divided by I should have 2 raised to power p, 1 raised to power p, should be 2n, तो नहीं होना चाहिए, so it should be, क्योंकि ये इसके साथ मैच नहीं हो रहा, क्योंकि ये ऑड है, ये इवन है, सो बजाय इसके लेट्स चेक दिस सीरीज, समेशन x स्क्वायर, मतलब वी कंसिडर द सीरीज, दिस वन को हम थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं, क्योंकि एक नंबर से 1 ऐड कर रहे हैं,
सब्ट्रैक्ट करने से कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगी। अगर ये सीरीज कन्वर्ज करेगी तो 1 ऐड करके भी कन्वर्ज करेगी, और अगर ये डाइवर्ज करेगी तो 1 ऐड करके भी डाइवर्ज करेगी। So let's consider this series x square by 2 raised power p, मुझे लगता है वो बेटर है, x4 divided by 4 raised power p, क्योंकि इसमें nth term is easy, यानी n is equal to, so that n is equal to x raised power 2n divided by 2 raised x raised power 2n divided by 2n whole raised power p, right? So that can be written as x raised power 2n divided by 2 raised to power p n raised to power p. Right now, if I take the nth root, right? So this would be limit n approaches infinity, a n raised to power 1 by n is equal to limit n approaches infinity. So you would have x square in the numerator. In the denominator, you would have what? You would have 2 raised power p whole raised power 1 by n and n raised power p whole raised power 1 by n. So हमारा जो टेस्ट होगा क्या करेगा? Okay. So in the denominator, I can just use the fact that अब इसको अगर हम reverse करें, so this would be limit n approaches infinity, x square divided by 2 raised to power of 1 by n raised power p, and then I have what? N raised to power 1 by n whole raised power p. So this is 1, right? Because this is positive और ये भी 1 है, ये दोनों limits. So this is just x square, right? So if x square is less than 1, then this by Cauchy's root test to it converge करेगा. So therefore, by Cauchy's root test, summation an runs from 1 to infinity converges if x square is less than 1, and diverges if what? X square is bigger than 1. So it would translate to x lies between -1 and 1. This is the same thing, and this would translate to -1, x is less than -1 and x is greater than or x is greater than 1. So ये case हो गए. Now in case x is equal to 1, summation n runs from 1 to infinity, when x square is equal to 1, then this would become summation 1 by 2 n raised to power p, n runs from 1 to infinity. So that would be 1 by 2 raised to power p into summation n runs from 1 to infinity 1 by n raised to power p. Now this is a p series. This converges if p is bigger than 1 and diverges if p is less than equal to 1. So हमारा, now therefore the original series, therefore the series 1 plus क्या था अपना?